Hello everyone, I am Mr. Amit More. So today we are going to see the second session of unit number 5 of employability skills. Name of session is our role in sustainable development. First of all, already we have discussed what is sustainable development. Sustainable development means what? The development in the present which will be in such a way that it will not compromise the development of future generation. ओके मतलब फ्यूचर में जो जनरेशन्स आने वाली है उनको आज की डेवलपमेंट की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. इट कैन बी रिलेटेड विथ द डेवलपमेंट कैन बी रिलेटेड विथ इन एनी फॉर्म. मतलब वो डेवलपमेंट ऐसी होगी जैसे अगर कंक्रीट जो हम बोलते हैं जो कंक्रीट जंगल हम जिसे कहते हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट करनी है तो वो डेवलपमेंट हमें इस तरह से करनी है दैट मेक यूज़ ऑफ द मोर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, more eco-friendly material in that particular infrastructure development, so that the future generations will not suffer from the side effects of that infrastructure. So that is why you need to maintain the balance between environment also and the development also. And third one is the economy. Okay, but in case of development, if we talk, we will just focus on the protection of the future generation also. Okay, so that is the sustainable development. Now, increasing population and development has led to the increase in consumption of natural resources. The more the population, the more food, energy and water we need. मतलब जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतना ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है एंड वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है. नाउ व्हेन वी ग्रो मोर क्रॉप्स, द सॉइल्स न्यूट्रिएंट are consumed and slowly the soil becomes unusable. Similarly, if we continue to use the fossil fuels such as coal, oil, and natural gas, very soon we will run out of these natural resources. तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेस रहेंगे वो नेचुरल रिसोर्सेस हम यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि देर इज़ इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड बिकॉज ऑफ विच सम natural but non-renewable products will get finished, so because of which we will not able to take advantage of the natural resources. We use so many resources from nature, but what do we give back to the nature? Factories give out smoke that pollutes the air. Garbage collected from homes is dumped into landfills. Untreated garbage can lead to disease and unhealthy environment. Sewage from the cities is dumped into the seas and lakes, making it unsafe for marine life. This shows that though we are using the natural resources, we are doing nothing to return or give back to the nature, but we are actually destroying it. Natural resources are limited and with time they will get over, and if we do not do anything about it, our future generations will not be able to survive. देखो बहुत सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस क्वेश्चन है अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेस. देर आर सर्टन रिसोर्सेस, there are certain natural resources which are non-renewable or which are limited. So if today we will make use of them in a limited way,
then we will able to preserve them and it can be useful for the future generation so that those generations will be surviving. Now, one initiative was taken by Ministry of Railways in Varanasi and Raebareli where they introduced pots coolers to replace plastic and paper cups and to bring back taste of tradition. Three major advantages gained by using coolers are two. First, reduce cutting of trees for making paper cups. पेपर कप्स बनाने के लिए जो ट्रीज की कटिंग हो रही थी उसका रिडक्शन हो गया, मतलब डिफॉरेस्टेशन उधर स्टॉप हो गया. जॉब क्रिएशन फॉर पॉटर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमी. देखो, फॉर सर्टन पीपल्स लाइक पॉटर्स जॉब क्रिएशन हो गया, बिकॉज ऑफ विच देयर वॉज improvement in their lifestyle as the economy increased, and reduction of plastic waste also happened. मतलब क्या हो गया, क्ले पॉट्स यूज़ हुए. क्ले पॉट्स जो डिकम्पोजेबल मटेरियल है उसकी वजह से एक्चुअली आपकी जो लैंड रहती है उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ दैट दोज क्ले पॉट्स. अगर वो मिक्सअप हो जाते हैं लैंड में तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर द नेचर. एंड वो यूज़ करने की वजह से देखो एडवांटेजेस क्या हुए थे. ट्री कटिंग बंद हो गए. ओके, इकोनॉमी डेवलप हो गई. उसके बाद प्लास्टिक का जो वेस्ट था वो नहीं, क्योंकि आप प्लास्टिक यूज़ ही नहीं कर रहे हो तो उसका वेस्ट ही, प्लास्टिक का वेस्ट ही उधर प्रोड्यूस नहीं होगा. ओके, सो दिस वाज initiative which was very appreciable by the Ministry of Railways. Now, our role towards sustainable development. What is our role towards the sustainable development that we are going to see? United Nations has formed 17 sustainable development goals SDGs so that countries and nations can work towards finding a solution to the growing problems in the world. Countries should form rules and guidelines to remove poverty and hunger and provide good health and quality education. These goals have been made so that all the nations take action to protect our air, water, and land from pollution and provide clean water, air, and energy to all the people. Sustainable development can actually happen only when each one of us works towards it. We have to become responsible environment citizens who can protect the environment through our own efforts. देखो, बेसिक यूनिट कौन है? बेसिक यूनिट वी पीपल आर देयर, where if the basic unit takes an initiative to work towards sustainable development, then only it will be possible. मतलब आप अगर खुद से अगर स्टार्ट करोगे तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज it will not at all possible. We have to become responsible environment citizen who can protect the environment through our own efforts. तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी आपकी वजह से एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होने में मदद हो सकती है. हियर आर सम बेसिक वेज इन विच पीपल कैन हेल्प टुवर्ड्स sustainable development goals. What are those? First, quality education. Education is the most important factors for sustainable development. Children who gone to school will be able to do jobs so that they can take care of themselves and their families. Education helps us become aware of our role as a responsible citizen. देखो, education it can be from any field. Every
from every field, a responsible citizen comes to existence. Okay, सो देयरफॉर आपको कोई भी फील्ड आपको जो पसंद है उसमें अगर आपने एजुकेशन लिया तो डेफिनेटली आप आपके कंट्री के लिए, आपके फैमिली के लिए, for the whole world, you can be the responsible person, and definitely your knowledge can be helpful for many people. So therefore you must have to take the quality education now, because of which you become a responsible citizen. So what we have to do, we should use the facilities present in our areas. हमारे एरियाज़ में जो फैसिलिटीज़ है उसका आप बेनिफिट लो. टेक अवर फ्रेंड्स टू स्कूल, हेल्प फ्रेंड्स स्टडी. आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको स्टडी में आप मदद कर सकते हो. स्टॉप फ्रेंड्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल. मीन्स certain situations doesn't occur in our area actually, but wherever the situation may occur, those at that point we should stop our friends from dropping out of schools. So quality education is the base of the sustainable development. Next, clean water and sanitation. We must make efforts to make India free of open defecation by building toilets and creating awareness towards sanitation. Industrial pollution is polluting our water resources, which in near future will cause scarcity of clean drinking and usable water. We must take measurable steps by promoting awareness to keep water resources clean. Therefore, look, here you can observe in this picture white water rafting available. So because of which uh, actually it is the initiative which is taken in order to protect the waters. ओके जो भी वाटर सोर्सेस है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है. ओके, नाउ लेट अस सी द फर्दर पार्ट. Next part of the sustainable development is affordable and clean energy. Using solar power, that is power generated using the sun, does not cause pollution as it does not require burning of non-renewable fuels such as coal. We are making efforts to increase the solar power generation so that our electricity needs are met, and at the same time we do not pollute the environment or use up natural resources. Use of biogas is an eco-friendly alternative to the natural gas. Okay, means what we have to do, we have to make use of maximum non-renewable, we have to make use of the renewable resources. रिन्यूएबल मतलब क्या, जो रिसोर्सेस हम रिन्यू कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली वो रिन्यू होते हैं, जो कभी भी एंड नहीं होते. एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज द सोलर पावर. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी शुड अवॉइड use of non-renewable fuels such as coal, and we should make efforts, we should take efforts to increase the use of solar power generation so that our electricity needs are met, and at the same time we do not pollute the environment or use up natural resources. Use of biogas is also an eco-friendly alternative to the natural gas. Okay, next, decent work and economic growth. What is decent work and economic growth? In for that, in order to achieve this decent work and economic growth, this goal, we can study and find good jobs to take care of ourselves and our families. We should work hard and contribute to society. Learn and develop skills
so that we get add value in our community. ओके, मतलब क्या, अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिला है तो आप और आपने उसका अच्छी तरह से यूज़ किया तो डेफिनेटली यू कैन बी द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन of our country, of the world also. Okay, and definitely your knowledge will be helpful to the other people and society. Now, reduced inequalities. Reduced inequalities, this goal is, in order to achieve this goal, what we can do, we should be helpful to one another. अगर कोई भी किसी को भी आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपको उसको हेल्प करनी चाहिए. यू शुड बी फ्रेंडली विथ एवरी वन so that the society gets attracted towards you, and definitely because of your helpful nature you become famous, and you can have more opportunity to work for people. Include everyone while working or playing. देखो, हर एक को अलग अलग नॉलेज रहता है, हर एक की अलग अलग कैपेबिलिटी रहती है. अलग अलग कैपेबिलिटी वाले लोगों को की वजह से उनको अगर आपने कोलैबोरेट किया, उनको उनको अगर आपने आपके साथ वर्किंग में इंक्लूड किया, डेफिनेटली नए नए आइडियाज़ आपको मिलते जाएंगे, एंड योर वर्क कैन बी ऑफ गुड क्वालिटी. Now, help others by including everyone, whether they are small or big, girl or boy, belong to any class or caste. देखो, inequality, it can happen in any way. It can be the caste discrimination, it can be uh, a discrimination on the basis of the economical condition, it can be the gender discrimination, कोई भी हो सकता है. So in order to avoid it, what we should do, we should include everyone in our work, and we should work together, then only we can move further. Okay, this tendency you should keep in your mind. Let us see the next goal: sustainable cities and communities. Creating sustainable cities. What should we do in order to create the sustainable cities? First, save energy by switching off lights and fans when not in use. Already we have discussed it a lot of times. Use natural light as much as possible. देखो, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो उस वक्त देयर शुड बी प्रॉपर distance between two buildings so that there can be natural light available to every room of that building, and definitely it will be helpful to reduce use of electricity. Use energy efficient lights, that is the LED bulbs and appliances, which is very useful in order to reduce the use of electricity. Next goal is responsible customers and producers. In order to become responsible about our own environment, we can contribute in the following way. First, reusing paper, glaस, प्लास्टिक, वाटर एक्सेट्रा. मतलब आपको रिसाइकल 3 R's अगर आपको याद है, रिसाइकल, रीयूज़, वो आपको बहुत अच्छी तरह से अप्लाई करना है. ओके, टेकिंग क्लॉथ बैग्स टू मार्केट, कैरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आपको क्या करना है, प्लास्टिक बैग का डिमांड नहीं करना है. आपको क्लॉथ बैग्स आपके साथ अगर आप लेके गए तो आपको क्या करना होगा, आपको प्लास्टिक की जो कैरी बैग है आपको उस शॉप में से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल टू यू टू सेव अवर एनवायरमेंट, टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल person. Donate things
we do not use such as clothes, books, furniture, fruit, food, etc. ओके, जो चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, जिसका आपके पास ज़्यादा यूज़ नहीं है, ऐसी चीज़ें अगर आपने डोनेट कर दी तो किसी ज़रूरतमंद जो इंसान होगा उसको उसका यूज़ हो सकता है, और उसको अगर यूज़ हुआ तो डेफिनेटली तो आपको भी एक सोसाइटी को सर्विस करने की आपको भी चांस मिलेगा, और उनको भी एक हेल्प हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट, बाय एंड ईट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम लोकल ग्रोवर्स. जो लोकल ग्रोवर्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल फार्मर्स जो हमारे नियर बाय रहते हैं, उनसे अगर हमने ईटेबल्स लिए सीजनल, तो डेफिनेटली अपना जो एरिया है उसमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होने में मदद होगी. नेक्स्ट, रिपेयर लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स टू अवॉइड वेस्टिंग वाटर. दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग. वेस्ट ऑफ वाटर अगर आपको नहीं नहीं होना चाहिए, ऐसा अगर आपको लग रहा है, तो आपको रेगुलरली मेंटेनेंस करना होगा टैप्स और पाइप्स का. नेक्स्ट, sort and treat garbage before disposing. What you have to do? You have to segregate the decomposable and non decomposable material from the garbage, and then uh, you can dispose the disposable material, and non disposable material आप एक अच्छी तरह से रिसाइकलेबल जहाँ हो सकता है उधर आप वो मटेरियल या गार्बेज आप डाल सकते हो. नेक्स्ट, प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर. Tons of plastic is found in seas, which is killing marine life. Protecting marine life, saving our oceans from pollution is necessary to preserve the marine life, and indirectly we are dependent on the marine life. Okay, if you think keenly, if you observe keenly, you can definitely come to know. Because of the marine life, we are getting certain fossil fuels, okay, and therefore we are able to survive today. और अगर आपकी वजह से if you are dumping the non decomposable material into the marine life, into the water, then definitely the marine life will come to end, and further life cycle will again get stuck. Next, protect life on land. Cutting off trees is leading to soil erosion and making land dry and unusable for cultivation. Planting more trees to replace the ones that we have cut is an important step towards sustainable development. तो आपको क्या करना है? ट्रीज कटिंग को रोकना है. अगर बहुत ज़रूरतमंद है तो what you have to do, you have to plant more tree to replace the ones that we have cut. Okay, so in that way you can protect the life on the land also. Let us see the exercise now. Multiple choice questions. Which of the following sources of energy is from a renewable energy? Renewable energy कौन सी है? Definitely it is a solar energy. वुड रिन्यू नहीं हो सकता, कोल्स रिन्यू नहीं हो सकते, पेट्रोल रिन्यू नहीं हो सकता. सो सोलर एनर्जी इज द रिन्यूएबल सोर्स. नेक्स्ट, choose the option which is not a sustainable development goal according to the United Nations. Clean water and sanitation, this is the one of the goal. Then gender equality is also one of the goal. Population, actually there is no any part of population in the considered under the SDG, that is a sustainable development goal. So third option is there. Subjective questions.
List some ways in which we can use resources sensibly. आपको क्या करना है? लिस्ट सम वेज इन विच वी कैन यूज रिसोर्सेज सेंसिबली. तो देखो, इसके लिए आप रेफरेंस ले सकते हो. ये जो वेज दिए हैं रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए, मेक यूज़ ऑफ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, देन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, आफ्टर दैट making use of reusable paper, glass, plastic, water, then in order to save the water we can repair the leaking taps and pipes, etc. These are certain steps or certain ways in which we can use the resources sensibly. Okay, next, explain the importance of education towards sustainable development. Importance of education towards sustainable development. Why is it necessary? देखो, अगर आपको अवेयरनेस है, आपको रिलेटेड विथ द टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन और रिलेटेड विद द एनवायरनमेंट, तो ही आप एक अच्छे सिटीज़न बन सकते हो और तो ही आप दूसरों को भी एनवायरनमेंट सेफ्टी के लिए आप अवेयरनेस दे सकते हो. सो देयरफॉर देयर इज़ अ इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी पार्ट है. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर the syllabus of employability skills is over. So all the exercises, all the sessions are covered from all the units. Okay, wish you best luck for the employability skills. You have to go through each and every part of the employability skills. Okay, so today we will stop over here. Thank you.